like to open up for questions? Yeah, sure. Yeah, questions. I would like the people at the back to ask some questions. The youngsters sitting at the back. I mean, yeah. Unless you're busy on your mobiles, okay. You search out a question from Chat GPT to ask. Yeah. Anyone, anybody from research scholars? Okay. Sir. Yeah, please. Sir, I want to ask, sir, okay, as you, while you were presenting paper, you discussed about the epistemic justice. So, as we talk about the truth with an experiment of Mahatma Gandhiji's, so he is talking about epistemic deficit. While he is talking about toleration, then he is talking about epistemic deficit. It means every truth is having some lack of information, so we should tolerate each other. So how is it possible to bring epistemic justice in the process of epistemic deficit? Thank you. Thank you very much. We came across while doing this paper a term called provincializing Europe. Basically, it was coined by Deepesh Chakravarti, who is a leading Indian historian and post-colonial theorist, internationally known for challenging ways of writing history and social theory. You know, he, while describing this term, I hope that the answer will be there, when I explain this, provincializing Europe. What it does not mean. It does not mean rejecting Europe, one thing. It does not mean cultural nativism, second. And third, it does not mean reversing Eurocentrism into Indocentrism. Okay. And what it does mean, the provincialized Europe is to treat Europe as one historical experience among many. So we also happen to exist somewhere, which was not taken care of. That's one thing which I mentioned there, rather than the universal template for all the societies, as Europe did. So importantly, European categories like modernity, nation, and then secularism, progress are historically situated. We have to understand. I'll just give one example. Secularism is an intra-religious concept, not an inter-religious concept. You have to understand this concept, okay? Likewise, other terms also which Europe throws on us. They cannot be treated as natural, universal, or inevitable. Other civilizations have different but equally valid historical trajectories. That's one reason that, and then applied to geography and space. When we say Middle East and Far East, we are accepting Europe as the implicit center. Second, treating European spatial consciousness as universal and silencing non-European ways of imagining the world. So, provincializing Europe means asking middle of what or far from where, restoring multiple spatial centers. So, allowing Bharat, China, Africa, and others to speak from their own coordinates. That's what I meant here. I hope. Thank you, Chair. Just walking out for lunch, Professor Gurmeet said, look, I think people do not know about the actual capabilities of the Navy. We've been in the business of hydrographic survey for a long, long time. I think you should bring it to the notice of the audience, so it's only for that reason I'm getting up. In addition, I also would like to compliment what Captain Gurpreet has brought out. In terms of our ability, today we are really come far ahead. In terms of our strategic forces, we have these Arihant class of ships. And it started long ago as the Advanced Technology Vehicle project, which has come to fruition. And there was another point which was in the previous session as to a lot of these research vessels from China have been coming in here, disrupting the entire thing. For those of you who have been closely monitoring the way we've been handling this,
the previous 2 missile tests, we are required to send out what's called a NOTAM, Notice to Air Mariners. So we intentionally issued a NOTAM when we are not carrying out the trial. And the Chinese vessels were all over, the Chinese research vessels. And we cancelled it. So they went back. We again issued another NOTAM to mislead them, and they were in this area. So there are many of these other things that we are doing done. Another point which was there about the hospital ship which Captain Gurpreet made, he will recollect, I was also part of the IPKF, and I was commanding a ship at that time. And we converted some of the survey vessels into hospital ships. It was there, it was always there. Not a dedicated hospital ship, I take your point, but we've always had the provisions of our ships being fitted for or fitted with. So some of these hospital ships are fitted for, the other ones are fitted with. So, this is already catered for. One point about the change of the naval ensign, at least the southern India was a little distraught because Cholas predate Shivaji and his reach was beyond Indian shores. It was Southeast area where he had set up the entire thing. And so but there's a minor point, as long as it's Indian in nature, it's fine. But there was this point to say that, perhaps the South Indian maritime history and legacy is being disregarded. So that was the point that I wanted to make. But we've come a long way, and thanks to all of you for this wonderful presentation. And I particularly liked your presentation, sir. And I think that's an eye-opener for all of us. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. I have an urgent request for the organizing committee of the Jamia Ismailia, JNU, and all other workable organizations here. Everybody spoke the truth, and Shakil is one example. Real truth. Professor Gopal, Pradhan, so many scholars spoke. What are we going to do with all these ideas? It has to be incorporated in our national workable curriculum. You understand that the university, college, school curriculum is defunct. Whether it is not only history or political science or sciences or any other, it has to be incorporated deeply workable, because we are old people, we are going to die, and what the young children will do, how they will manifest all these things, because leave alone the state politics meddling with these things. How we are going to overcome? We are talking about Viksit Bharat or soft power and many other things. Wonderful ideas. In fact, can we make it productive so that they live, their generations live for a very good posterity, in fact. So that is what I'm requesting the honorable scholars who have contributed immensely in this conference. A lot of new ideas have precipitated here in this conference. Our military personnel, our scholars, our professors, all these, they have brought an integrated knowledge system. Indian knowledge system is so rich, actually, in fact. Why can't we do it now, before it is too late? When we walk out after 5 o'clock from here, I think this has to be manifested in print, in the television, and also at the state level Ministry of Education. Thank you, sir. So, Thank you, sir. So before I request Professor Hussain to give some comments on this, yes, Dr. Indresh Kumarji yesterday said this, that the major points of this seminar, and there's some very interesting points which have come out, should be formulated in a policy document, a policy suggestion, a draft policy, whatever it is, and sent to the respective ministries. We do it from time to time. There was a Central Asia, similar kind on Central Asia 3 years back, and that was attended by all the diplomats, and we sent out a thing. So I think your suggestion is well taken. Professor Hussain. ओके ठीक है सर, थोड़ा सा जवाब इसका थोड़ा लंबा है, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा शॉर्ट में करने के लिए। जो इशू मैंने उठाया है वो बहुत लंबे समय से मेरे दिमाग में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद उसे एक शक्ल ले पाया है, और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि मेरा अपना मानना हो सकता है गलत हो, आप लोग इस पर बात कर सकते हैं, कि संस्कृति की जो माँ होती है वो भाषा होती है, उसका पिता होता है भूगोल, और यहाँ से संस्कृति पैदा होती है। लेकिन संस्कृति परवान चढ़ती है थ्रू पावर, जो सत्ता में होता है वही संस्कृति फैलाता है। सूफिज्म की संस्कृति पूरे दुनिया में फैली ये ऑटोमन एम्पायर के थ्रू, और क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ने, तुर्कियों ने
इस्लाम को टर्कनाइज करके लिया। रिचर्ड तैयब अर्दवान, इसमें सिर्फ तैयब अरबी है, दैट इज आल्सो तैयब। अरबी लोग प नहीं बोल सकते, दे कांट से पाकिस्तान, दे विल से पाकिस्तान। ठीक है, जो पाकिस्तान है भी बाकी उधार में डूबा हुआ है, ठीक है, तो दे कांट से पाकिस्तान, तो वो ब को प बोलते हैं। तो तैयब सिर्फ अरबी है, रिसेप टर्किश है, अर्दवान उनके क्लान का गोत्र है। तो टर्की ने टर्कनाइज करके इस्लाम को अपनाया, और वो टर्किश के थ्रू, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज ए टर्किश, गुलाम वंश का शासक जो था वो तुर्की का था। तो भारत में एक भी अरबिक शासक नहीं हुआ जो मुसलमान था, एक भी शासक अरब से नहीं आया। मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया और लौट गया वहाँ से, वो अरबिक था। अगर अरब से अरबिक शासक आते तो निश्चित रूप से बहुत, जितने संख्या में मुसलमानों का कन्वर्जन हुआ उससे 2, 3, 4, 5 गुना कन्वर्जन होता, क्योंकि वो कन्वर्जन के लिए जाते थे। टर्किश और ईरानियन लोगों का उद्देश्य ये नहीं था, उनका शासन करने का उद्देश्य था। तो ईरान और टर्किश मूल का इस्लाम भारत आया, ऑलरेडी ये संस्कृतिकृत होकर के आया था। इसलिए भारत में पहले खुदा हाफिज चलता था, वहाँ भी इम्पैक्ट आया तो ये अल्लाह हाफिज हो गया। तो खुदा हाफिज से जो अल्लाह हाफिज की जर्नी है, दिस इज द रियल प्रॉब्लम। अब इसको अच्छे रिसर्च वर्क से इसको समझा जा सकता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो भारतीकरण हुआ है इस्लाम का, अगरबत्ती, ठीक है, पहले भजन गाते थे, अब क्या गाते हैं, कन्वर्जन के पास कव्वाली गाते हैं। गाना बंद नहीं किया, दिया जलाते थे, अगरबत्ती जलाते हैं, आग से रिश्ता खत्म नहीं किया, ठीक है। तो ये जो कल्चराइजेशन होता है रिलीजन का, वो सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ। जो इस्लाम इंडोनेशिया में है उसको बोलता हूँ मैं, मेरे हिसाब से 5 टाइप का इस्लाम है दुनिया में। एक अरबिक इस्लाम है, दूसरा ईरानियन ब्रांड का इस्लाम है, तीसरा टर्किश ब्रांड का इस्लाम है जो बोस्निया ईस्टर्न यूरोप तक है, चौथा भारतीय इस्लाम है, और पांचवा मलय इस्लाम है। तो मलय इस्लाम इज वेरी मच इंडियनाइज्ड इस्लाम। तो मलय इस्लाम सबसे ज्यादा लिबरल है। वहाँ यहाँ मुसलमानों में शादी होती है, लड़की अलग घर में जगह रहती है, लड़का अलग जगह रहता है, पर्दे में रख करके निकाह पढ़ाते। मेरा खुद वैसे ही हुआ है, मैं शादी कर रहा हूँ, मैंने अपनी बीवी को नहीं देखा, ठीक है। अब ये तो अरब से आया था, लेकिन वो इंडोनेशिया में मौलवी के सामने, मैं मौलवी हूँ तो मेरे सामने लड़का लड़की दोनों ऐसे हाथ पकड़ के, आप गूगल कर लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हो सकता हूँ, ठीक है, आप यूट्यूब में चले जाइए, आप AI की सहायता ले लीजिए, वो दोनों हाथ पकड़ के ऐसे बैठते हैं और निकाह कबूल करते हैं। टर्की में एवरी मुस्लिम कंट्री नीड्स से अतातुर्क कमाल पाशा, कान पकड़ के उसने नेशनलाइज कर दिया, कान पकड़ के। वो यहां छोटे से में हल्ला मचाने लग जाते हैं। स्टेट का इतना पावर है, जो मस्जिद में खुतबा होता है, बुलाइए मौलाना को, मैं लाजवाब न कर दूं तो मेरी डिग्रियां फाड़ के फेंक दीजिएगा। जो मस्जिद में खुतबा होता है जुमे के दिन मिंबर पे बैठ करके, इट इज स्टेट पावर। राज्य को अधिकार होता है वो खुतबा तय करने का। राज्य वो खुतबा इसलिए होता था कि इस्लामिक स्टेट की नीतियों के बारे में लोगों को बताया जाए, दैट वाज द पब्लिक रिलेशन ऑफिस। तो स्टेट को इतना पावर है, लेकिन इसलिए स्टेट ने ये जो नोमेनकल्चर डॉक्टर साहब ने बताया, ये जो सेकुलरिज्म का जो नेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट था, कहाँ का सेकुलरिज्म? सीनेट, चर्च की वोकैबुलरी है सीनेट, असिस्ट प्रोफेसर, रीडर, these are the terms came from church. The person who can profess, that is professor. Who can read the Bible, that is reader. Who can give a lecture to hear Pope, that is lecturer. सब सारे शब्द चर्च से आए। काउंसिलियर मूवमेंट नहीं होता तो लोकसभा राज्यसभा नहीं होती, हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं होता। काउंसिलियर मूवमेंट के बाद डेमोक्रेसी इमर्ज की है। तो कहाँ का आपका धर्मनिरपेक्षता है? उनको धर्म ने इतना बर्बाद कर दिया था यूरोप को कि मैकियावेली ने को कान पकड़ के धर्म को राज्य से बाहर करना पड़ा। हमारे यहाँ धर्म ने राज्य को इतना बर्बाद नहीं किया था। तो हमें एक पूरा
पैरेलल नैरेटिव बनाना है। हो क्या रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम से भी जो कुछ हो रहा है, 5 स्लाइड बना के वही विद्वान घूम के उसको घुमा रहे हैं, बाकी कुछ लिखा पढ़ी, कोई कंटेंट राइटिंग नहीं हो रही, कोई रिसर्च नहीं हो रहा है, कोई करिकुलम में चीज़ें नहीं आ रही हैं। आप देखिए कि यहाँ जितने मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें वो सीट को फॉर्म करिए, उसमें करिकुलम को डिज़ाइन करिए, जो फील्ड में वो जो गरीब मुसलमान है उत्तर प्रदेश बिहार का, जो जिसको पसमंदा बोला जाता है, लिटरली ही इज़ नॉट ए मुस्लिम एट ऑल, उसको कलमा भी नहीं आता, नमाज पढ़ने भी नहीं आता है, लेकिन वो असली भारतीय हिंदू मुसलमान है। क्यों? 90% उसकी आदतें, उसका खान पान, उसका रहन सहन, सब कुछ वो हिंदू समाज से आता है। अब उसको रिकॉग्निशन देने की जरूरत है। या सोफिस्टिकेटेड वो मुस्लिम जो रेडिकलाइज हो चुका है, बड़े करीने से बड़ी शराफत के साथ बात करता है, लेकिन जाता कहाँ है? इज्तिमा में। ये 5-5 लाख के इज्तिमा, इस पर बैन लगा देना चाहिए फौरन से पेशतर। ये जो हरियाणा में डॉक्टर ने कांड किया था, मेरा अंदाज है, भारत सरकार उसकी जांच करवा ले उस अंदाज की, हो सकता है सही निकलेगा, कि वो डॉक्टर, उसके कुछ दिन पहले हरियाणा में 3 लाख का इज्तिमा हुआ था, 3 लाख मुस्लिम्स का ये जमात इस्लामी वाले ने किया होगा, निश्चित वो डॉक्टर गया होगा वहां वो रेडिकलाइज होते हैं। दिस इज शिर्क, दिस इज बदत, दिस इज ऑल पॉलिटिकल इस्लाम endorsed by Nazdi kind of king of Saudi Arabia. They are adversary of the Prophet Muhammad's clan. आप गूगल करिए जॉर्डन को, जॉर्डन में लिखा आएगा जॉर्डन द हाशिमाइट किंगडम। हु इज हाशिमाइट? दिस हाशिमाइट इज द क्लान ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। और उनको मार के अंग्रेजों ने भगा दिया, बहला फुसला के कहा जॉर्डन में तुम क्या सुखा में पड़ा हो यहाँ पे नीचे, चलो तुमको फर्टाइल क्रिसेंट में ले चलते हैं। और ये वहाबियों की शर्त थी, लॉरेंस ऑफ अरबिया के साथ पैक्ट हुआ था उनका। क्यों? फर्स्ट वर्ल्ड वार, आप माफ करिए किसी और वजह से नहीं हुआ था, बस 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा मैं अपनी। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तेल के लिए, जो जर्मनी की मदद से ऑटोनम एम्पायर ने मक्का तक रेल लाइन बिछाई थी, उस रेल लाइन की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। तेल कहाँ मिला? सब फारस की खाड़ी के पास जो अरबिया है, वो नजदी इस्लाम है। इधर मक्का मदीना में कोई तेल का कुआं नहीं है, सारे तेल के कुएं कहाँ हैं? ईस्टर्न कोस्ट पर। और वहां कौन था? अब्दुल वहाब का खानदान। उनकी शर्त थी, उनके जीवन भर का स्वप्न था, आप अरबिया का हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उनके जीवन भर का स्वप्न था कि मुझको मक्का पर शासन करना है। और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि आप हमको पूरे मक्का पे अगर कब्जा दिलवाएंगे, पैन अरबिया पर, तब हम आपकी मदद करेंगे। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में लॉरेंस ऑफ अरबिया ने वो किया, ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ उनकी मदद ली और बड़ी शराफत से इनको पहुंचा दिया जॉर्डन में। और इनका ओके, थैंक यू। एक बात मैं इनकी बात पर ही, हाँ बहुत शॉर्ट होगा। कई बार हमारी डॉक्टर शकील, हम दोनों साथ में पढ़े हैं, बचपन से मित्र हैं, 40 वर्ष हो गए लगभग साथ में। ये कभी कई बार अनौपचारिक वार्तालाप होता है तो ये हमको कहते हैं कि विशेष करके वर्तमान संदर्भ में जब हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष को सऊदी अरब में बहुत सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, तो ये मुझको कहते हैं, चूँकि मैं संघ से जुड़ा हूँ, तो कहते हैं कि लोगों को ये गलतफहमी है कि अगर उनको सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है तो वो ये सोचते हैं कि हाँ, तो उसमें हमें ये देखना होगा कि ये हमें कहते हैं कि हमें देखना होगा कि जो वो पीछे से जो इस देश में कार्य कर रहे हैं उस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा इन्होंने अपने वक्तव्य में भी Yeah, this will be offline. Thank you very much. Your response, Professor Hussain, is very passionate, and I think it's been well absorbed. Now, I'll conclude. This session is about the future prospects of Bharat in the Indian Ocean region as it increases its strategic reach. So I'll dwell upon what is to be done as I understand. First of all, there is a need for us as scholars to understand that in our quest to enhance our strategic outreach, what do the world powers think about it and where are they on it? China, Russia, America, and the European Union. These are the main powers. So we have the US National Strategy document which has come out,
And that can give an idea, and we have other ideas. Please also remember that America and Russia both have got now agreements, naval agreements with us, where we will carry out the repair of their ships and the victualling. Why is it important? Because that is the theme of this seminar, the importance of Bharat. There can be no geopolitical power play in the Indian Ocean region without India. India is centric to everybody. And that is the key takeaway which I would like to convey. Now, there are three things. If we have to get into this, I must talk about vision, intent, and implementation. It's only now in the last 10 years a vision has been, a strategic vision for India has been given. That is the Viksit Bharat by 2047. It's a dream. And if you don't dream, you will not reach there. That vision is there. Now intent, I'm saying in short, intent is there. This Sagar plan and Mausam and so many other things, the intent is there. But the implementation is what Captain Gurpreet and others spoke about. That is where we have to focus on, and it cannot happen with this kind of an outlay in the civil shipping space and in the naval growth. We are making ships, many submarines, because the next warfare in the Indian Ocean region is going to be underwater warfare. So with 2% GDP, we can't manage it. So there has to be a thinking that unless it goes up substantially, we cannot buy those expensive ships, aircraft carriers, submarines, nuclear-powered submarines, etc. Also, the more important part is, I think somebody's brought it up, the civilian shipping has to increase. And the SCI, which was great, has been languishing due to a lot of reasons. They are now being pumped up to generate, buy more ships. Where more important is the private sector. See, Adani's today's in the papers have got already, they have bought 126 ships. They own it, including tugboats, and out of them 4 are bulk carriers. So this public, the private people have come, and private people can only buy ships, develop the ports if they have funding. The funding also has to be come through our banks, which is the Indian public, the Indian government have to step up on this. So the funding is important. The other thing which I want to cover is the Indian Ocean region is not only about the Navy. I'll speak briefly about the Navy later on. Not only about the shipping control and the shipping fleet which we bring up, the civil shipping fleet. It's also about a very important component, and that is our fishing fleet. The Chinese have weaponized their fishing fleet. Their ships fish up to Djibouti, where they have got a base. And recently I read that their ships have, their fishing fleet has been, small boats, have been ordered to assemble at one place and line up as a kind of a blockage. And they lined up for about 50-60 kilometers. So our fishing fleet also has to be geared up. They have to become a cohesive entity to project our power, our influence. And that's where the Coast Guard is doing a magnificent job. I also want to touch upon the Indian Navy. The Indian maritime tradition was very rich. The shipbuilding was very rich. The Indian Navy has got its own constructors they call it. They construct these design of the ships, very less known. They were far ahead of in the Make of India cycle. But they have also done a yeoman job by making these port of calls, which have got a lot of other meaning also. So the Navy, besides doing humanitarian missions, they have projected the power. And finally, I would like to say, if India has to stand up in the Committee of Nations in the future, it has to project one power, and that is sea power, naval power, both in the shipping domain and in the warfare domain. So with that, my pleasant duty is to thank the speakers, Captain Gurpreet, Professor Gopal, Professor Hussain, and for an attentive audience. And I have been lucky that out of all the chairs in this, I have been the luckiest because I've had the luxury of time. Thank you very much. Thank you so much, sir, Major General Bhattacharya. The wonderful sum up of the session. Now the session would proceed for the further, that is a brainstorming session. Thank you so much, sir, all of you.